Hi, good morning, everyone. Welcome to this daily live market analysis. We do this every day in the morning at 8:45 a.m. on our Upstox channel. And मैं अमित गोयल CMT एंड सभी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ जो ये हर रोज सुबह जिस दिन मार्केट चालू होता है अबाउट 8:45 a.m. चालू करते हैं जिसमें हम क्या समझते हैं व्हाट डू वी डू व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल clean that we look at the global market sentiments, we look at the trends that could, shape up the news flows, the important points on the charts that could shape, that could, uh, sway how the markets are going to behave. What are the main things that we should be looking for? ठीक है, एक structured approach होता है जिसमें हम अपने प्री मार्केट ओपनिंग का एक बायस क्रिएट करते हैं ताकि day traders, intraday traders, or even swing traders get some sort of a working template, a checklist, जिसके द्वारा हम मार्केट का ब्रॉड ट्रेंड, ट्रेडेबल लेवल्स समझ सकें। हम क्या नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, कोई स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते। वी जनरली स्पीक अबाउट the broad levels of supports and resistances, broad trends from where we are expecting the markets to turn, what is the derivative data telling us, यही सब हम लोग देखते हैं। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट सम बेसिक डिस्क्लेमर्स। मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर भी चालू कर देता हूँ। All right, friends. So this is the disclaimer. Upstox presents daily live market analysis. My name is Amit Goel, CMT, SEBI registered RA. Standard warnings and disclaimers. Do I have any direct financial interest in this? The fact is that I do not have any direct financial interest in any of the stocks that we recommend, that we discuss, and I do have indirect exposure in the underlyings in the general equity markets via mutual fund investments. All right, now let us start with the global market scenario. Definitely, we will be discussing about a lot of the markets. Broadly speaking, what is happening in the markets? Yeah, happy Holi to everyone. Primarily, what we are looking at the markets. How are we looking at the markets? What is happening? The global sentiment. The global sentiment is that of a war. There is a clear war that is happening between US and Iran. वो तो हो रहा है. Today, I think, is the 5th day of the escalation. And why is it important? Because it has a very strong bearing on our equity markets. अब यूएस का हैंडओवर जो हम लोग देखते हैं, what are the data points that we track on a structured basis? The data points that we track on a structured basis is this. हम लोगों ने मंडे को which was the 2nd of let me just change the date. It's not correct. Yes. Okay, the Monday, 2nd of March, what we had discussed, we had looked at the global headlines, which is US-Israel-Iran conflict, sentimentally negative but anticipated. Such events do not have major negative impact on equities historically. Negative handover hai, morning cues are negative, but some buying is seen at lower levels. Negative mostly, but green candles. Gold, silver, crude are all up. Crude has formed a large red fade out candle in spite of 5% gains as we speak. All right, now what did we also discuss? We discussed that key index levels are 24,500 is the budget low and crucial support. Expect Nifty to hold and respect this low, and 25,000 is the open interest levels. All right, intraday's technical structure is weak but near budget low or support area of 24,500.
ऑल राइट, सो नाउ व्हाट आर वी लुकिंग एट। हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केट में वीकनेस है, और मार्केट जो है, इंडियन मार्केट्स आर लाइकली टू आर नियर द सपोर्ट लेवल्स ऑफ 24,500। हिस्टोरिकल डेटा ये भी बताता है कि जो भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर ये प्रोट्रैक्टेड नहीं होते तो मार्केट्स टेंड टू रिकवर इन द नेक्स्ट 1 to 3 months के बीच में। मार्केट्स रिकवर मोस्ट ऑफ द लॉसेस, all the losses, and in fact are generally trade higher than what it was on the day of the breakout. एंड इसमें एक डिस्टिंक्शन भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जिसमें एंटिसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात किया था। जहाँ पे अनएंटिसिपेटेड कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ह्यूमन एंड फाइनेंशियल लॉसेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश होती है, लाइक टेररिज्म, 9/11, पार्लियामेंट अटैक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहां पर इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे शॉक एलिमेंट ज्यादा होता है। एंटिसिपेटेड वॉर जो होते हैं, जहां पर बैक चैनल से ऑलरेडी डिस्कशंस हो रहे होते हैं, टेंशंस मार्केट एंड न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह डिस्कशन हो रहे होते हैं, उसमें मोस्टली आप वीकेंड्स पे देखोगे, मेजर स्ट्राइक्स हैपन। दे टेंड टू गो ऑन फॉर अ वीक और टू, during which time the markets are jittery, there is uncertainty, there are losses reported on both sides, and eventually we have seen there is this pattern in the market that eventually कोई ना कोई सीज फायर, कोई ना कोई डिक्लेरेशन होता है जो डी एस्केलेट करता है पूरे मैटर को। टिल सच टाइम, जैसे बोलते हैं ना, द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, ठीक है, उसी हिसाब से यू विल फाइंड कमेंट्रीज लाइक द वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, इस तरह का कुछ कमेंट्री आपको सुनाई देगा कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है एंड दिस कुड एस्केलेट इनटू अ वेरी लॉन्ग वॉर, न्यूक्लियर की बात होगी, सब कुछ होगा। दैट वुड प्रोबेबली बी, इन माय ओपिनियन, एज हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट, द बॉटम फॉर द मार्केट। अब वो आ जाएगा, 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, वी डोंट नो, बट वी विल हैव टू ट्रेड द चार्ट्स, राइट। सो अब चार्ट्स में क्या दिख रहा है, लेट अस गो एंड सी द यूएस हैंडओवर। यूएस हैंडओवर कैसा था? All right, now US did give a very sharp down move, and it gave a nearly 2% bottom, ठीक है, यूएस में। एंड हम लोगों ने जो पहले ही मार्क करके रखा था 6,200 एज अ सपोर्ट फॉर द ब्रॉड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द यूएस मार्केट्स, वहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया एंड काफी सारा स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिला। सो डेटा वाइज अगर आप नेट नेट देखें तो इज द मार्केट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज? द आंसर इज यस, मार्केट इज डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, बट प्राइस एक्शन वाइज क्या दिख रहा है? प्राइस एक्शन वाइज ये दिख रहा है कि देयर इज बाइंग सीन एट लोअर लेवल्स। तो टिल द लोअर लेवल्स ब्रेक, अ क्लियर swing short does not manifest itself. इंट्राडे में द मार्केट्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, दोनों तरफ से मार्केट मूव हो सकता है। You could see, in spite of you can see that we do have a gap down coming up of about 500-600 points. उसके बावजूद क्या मार्केट वहां से रिकवर करेगा इज नॉट विल और नॉट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल क्वेश्चन। क्या खुलते ही मार्केट्स में हम लोगों को पुट लेना चाहिए? द आंसर इज गोइंग टू बी नो। व्हाई? बिकॉज वन थिंग इज फॉर श्योर कि आईवी लेवल्स जो है ऑप्शंस के, वो एलिवेटेड होने वाले हैं। ओके, मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट आफ्टर अ हॉलीडे एंड देयर इज गोइंग टू बी एलिवेटेड आईवी लेवल्स, जिसके कारण पुट्स जो है काफी महंगे होंगे, कॉल्स भी काफी महंगे होंगे। सो अगर आप कोई भी रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो कि भाई मार्केट में बाउंस आएगा और यहां से ऊपर जाएगा, तो वहां पर इफ द मार्केट टेंड्स टू गो अप, देयर कुड बी बिकॉज यू बॉट calls or puts at higher levels, any bit of cool off in IV during the day is going to have a sharp negative impact on your option buying. अगर आपने पुट बाय किया एंड वहां से भी मार्केट ने रिकवरी किया, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। If you are bearish on the market, if you feel that the levels are not going to hold, the better trade would be to do credit spreads because of higher elevated IV levels, ठीक है। एंड अगर मार्केट कंटिन्यू किया नीचे जाता हुआ, तो वो IV levels सस्टेन हो सकते हैं। On the other hand, if you feel that the market is likely to bounce from here,
a very risky trade would be to do a bull put spread, again a credit spread, क्योंकि अगर मार्केट ने रिकवर किया यहाँ से इंट्राडे में, there is likely to be an IV pool of interim that will also benefit your short term trades. Overnight trades लेना थोड़ा risky हो सकता है for short term traders. So trade the day, trade the candle, trade the price action during the day, and ideally if you're a short term trader, overnight positions या तो बहुत light रखें या तो ना रखें, because markets are fungible, markets are sensitive, uncertain, and कोई भी strong reaction market दे सकता है. So let us be a little careful and be aware and cognizant of this fact. Is the market, are you not able to see the charts? Okay, you are able to see the charts because मैं भी YouTube पे देख पा रहा हूँ, चार्ट दिख रहा है यहाँ पर. Now दिस इज S&P 500. कल की जो क्लोजिंग थी, देखो एक जैसे 2% का नेगेटिव था एंड वहां से मार्केट ने रिकवर किया. S&P, नैस्डैक, डाउ, सारे के सारे जो हैं उन्होंने लोअर लेवल्स से सपोर्ट लेता हुआ दिखा है. ठीक है, बट द स्ट्रक्चर इज, इट हैज, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सारे के सारे मार्केट्स ने एक नया लो पंच किया है. तो अगर मैं लाइन चार्ट डालूंगा तो यू विल बी एबल टू सी very clearly on the line chart that on a closing basis we have not closed below this level of 6,900 6,800. करेक्ट. आप लाइन चार्ट डाल के देखेंगे जिसमें विक्स कैप्चर नहीं होते, so you will see the punch of the prices. ठीक है, so until and unless we start trading below these levels, there is some hope left in the market. Now this is about the global markets. What is the futures telling us? How is the Asian markets performing? As expected, Nikkei is actually reacting much more strongly, which is a surprising phenomena, क्योंकि जो मार्केट्स में इम्पैक्ट आना चाहिए वहां पर बाइंग दिख रही है एंड एशियन मार्केट्स में मैसिव सेल ऑफ दिख रहा है. इज इट अ फ्लाइट टू सेफ्टी? क्या यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी पैसा बनाया है? एशियन मार्केट्स लाइक कोरिया, लाइक जापान, लाइक चाइना, हांगकांग, और वहां से मार्केट अपना पैसा निकाल के फ्लाइट टू सेफ्टी लाइक डॉलर, गोल्ड में जा रहा है, या मे बी द ट्रेड नाउ इज इन क्रूड. तो क्या पैसा यहाँ पर फ्लो हो रहा है इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, बिकॉज देर इज सम डाइवर्जेंट price action in the Asian equities as well as compared to the US equities. Kospi, Korean market has actually been halted. 10-11% का नेगेटिव दिखाया. ठीक है, तो लोअर सर्किट मारा है. नाउ कॉस्पी में पिछले 2 दिनों से बहुत शार्प मूवमेंट आ रहा है, एंड दिस इज नॉट ओनली टू डू विथ what is happening in the global markets, but it is also to do with their own markets which had run up very sharply. तो हम लोगों ने सिल्वर में भी इसी तरह का देखा था, कॉस्पी में भी ये was it expected? The answer lies in the overbought nature. We can see very clearly, हम लोगों ने कॉस्पी को कई दिनों से देख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, that the markets are overheated, right? So some bit of correction was warranted, but this sharp correction is going to happen, ये हमारा expectation नहीं था. Let's be honest on that front. Okay, so the Kospi market, which is the Korean market, जहाँ पे Samsung is a major index contributor, is showing a very sharp downtick. What about the other markets? Hong Kong market वैसे भी weak था and it continues to slide, and lower levels यहाँ पर जो दिख रहा है, it has broken through these lower supports. तो Hong Kong markets जिसमें काफी पैसा बना था ऑफ लेट, हांगकांग, कोरिया, जापान, वहां पर वीकनेस दिख रहा है. सो द मनी इज रोटेटिंग फ्रॉम देयर एंड गोइंग इनटू आइदर डॉलर इंडेक्स, which is essentially dollar, which is essentially crude, or even gold. So the Asian market handover is weak. The US futures are trading weak as compared to the spot market, which was yesterday's handover. All right. So what we will notice and what we will mark in our charts are continued escalation in US-Iran conflict.
expect volatile sessions with downward bias in the short term. Medium term uptrend intact. So let's have both the parts. Now, what is the US handover? The US handover is weak, or let's say negative and over. Morning cues from Asia and the Japan is negative with strong bearish moves seen in Korean and HK markets. Gold, silver, and let's see gold, silver, and crude. Now, yesterday there was a very surprise. अगर conflict इतना strong है, तो gold में जो है आपको negativity दिखनी चाहिए थी, आपको positivity दिखनी चाहिए थी, and gold में काफी strong up move दिखना चाहिए था. But कल जो है gold का 3.5% से नीचे का flow आया था, which is very surprising, right? But this is also a fact कि अगर smart money को ये लग रहा है कि the conflict is not going to last long, तो वो gold में बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनाएगा. ऑलराइट, सिल्वर जो है सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाया था, एक ब्रेकआउट देखने की कोशिश दिखाने की कोशिश किया. However, it has given up and is now again trading back near the means. Look at crude. Crude में जो हम लोगों ने एक असेसमेंट किया था, which is on the weekly time frame, what did we say? That our assessment of this channel gets invalidated. Our primary assessment is crude is going to follow this trend line channel and revert back into this channel. ठीक है, अब इसका assessment तभी invalidate होता है when crude starts trading above the $78 and it trends above it. ठीक है, तभी ये चैनल अपना ब्रेक होता हुआ दिखेगा. Alright, now if you look at the kind of moves that crude is giving, because Saudi Aramco को अभी ऑयल सप्लाईज में हिट हुआ था, कुछ मिसाइल्स गिरे थे, तो दोनों तरफ से क्रूड का जो एक टेम्पररी एस्केलेशन है, जो एक वहां पे मिसाइल्स गिरने के कारण क्रूड में एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल ऑन द चार्ट्स. एंड जो परसों इनिशियल रिएक्शन फेड होने का था, दैट इज नाउ गेटिंग some more strength on the upside. However, crude is going to be, in fact, all the markets are going to be very, very volatile. तो थोड़ा अगर आप ट्रेडर हो, आपको थोड़ा circumspect होके थोड़ा समझ के काम करना है, because markets, if you notice, can turn either side very, very fast. Now, let us look at GIFT Nifty. GIFT Nifty का हमारा ओपनिंग किधर हो रहा है, और हम लोगों ने शायद ओपनिंग भी कर दिया है. सो लेट अस लुक एट द एक्चुअल मार्केट्स हियर. लेट मी इन द मीन टाइम, जब ये चार्ट खुल रहा है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. फॉर स्कैल्पिंग एनी सजेशंस, लेट अस सी इफ वी कैन गेट एनी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज. नाउ मार्केट्स ट्रू टू इट्स फॉर्म इज शोइंग अ 500-600 पॉइंट डाउन टिक, एंड मार्केट्स जो है करीब 24,250-270 के आसपास, या लेट्स से 24,300 के आसपास खुलते दिख रहे हैं. अभी लोग ने लिखा है कॉल लो पैसा बनाओ. सर, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि आईवीज जो है एलिवेटेड होने वाले हैं, तो बाइंग ऑफ ऑप्शंस कैन बी slightly difficult. Now, where is the market opening? The market, अगर आप यहाँ पर देखें, is opening somewhere around 24,800 के आसपास. अब market is likely to open below the budget low, जो हम लोगों ने एक line in the sand बनाकर रखा था
कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेंड करता है देन देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मार्केट. करेक्ट. नाउ द ओपनिंग टिक सीम्स टू बी well below the 24,571 budget low. ठीक है. So is this structurally negative? क्योंकि हम लोगों का जो एक स्ट्रक्चर था पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, which is 26,373 on the top, and the budget low which it had created in the initial part of February, which is 24,571, उसके नीचे मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है. So this strong negative open has happened. Now यहाँ पर क्या मार्केट सस्टेन करेगा और will we see a strong green wick? कि मतलब नीचे से मार्केट खुला and वहां से मार्केट में बाइंग आई and market gives a green candle. That is going to be the interesting pattern that we have to look out. अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, इस लेवल को सस्टेन करता है, इस बजट लो को गैप डाउन के साथ तोड़ता है, where are we likely to find fresh support? The fresh support is likely to be around this level, which is 24,000. Correct? So now we will have to bring this into picture, क्योंकि ये शायद एक नया आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है. ये तो यहां से टूट गया है. So let us remove that support level and mark it well below here. Okay, which is 24,000. तो राउंड नंबर है 24,000 के आसपास यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है. ये फ्लिप लेवल जो है, यहीं पर हम लोगों ने सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस बनाते हुए मार्केट इसमें ट्रेड कर रहा था, बट नाउ as you notice it is opening well below that level, and whether we will sustain that level or not is something that we will have to understand. ठीक है. What is the expectation here? Just because it has created a new tick, can we sustain that level? Possibly. My expectation is that we are likely to see some bit of value buying at lower levels. कौन से सेक्टर में लेना है, कौन से स्टॉक्स में लेना है, is a little difficult to tell in these times, but the bottom line is, do wars last? अगर आपका ये थीसिस है कि मार्केट खत्म हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 है, तो आप फिर कोई मतलब ही नहीं है ये सब करके, कोई ट्रेडिंग करके या कोई इन्वेस्टमेंट करके तो मतलब ही नहीं है. मगर आपको लगता है कि ये शायद 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता शॉर्ट टर्म हो, और उसके बाद मार्केट में कामनेस आ जाए, दोनों तरफ बोले कि अच्छा चलो बहुत लड़ लिया, अब लेट अस वॉट एवर न्यू स्टेटस को इज देयर, वी लेट्स डिस्कस, लेट्स कॉल अ सीज फायर. अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में there is a possibility. See, can the war escalate into World War 3? That's one scenario. The answer is, in my opinion, no. But can the war escalate some more and eventually find a ceasefire? The answer is yes. कि शायद पेन हो, but eventuality ये लग रही है कि कहीं ना कहीं जाके ceasefire होगा. In that instance, in that scenario, लोअर लेवल्स पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पोजीशन, फ्रॉम अ स्विंग पोजीशन, टू लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. ठीक है. क्या वो दिन आज है? कैन आई बी बोल्ड इनफ टू कॉल द बॉटम ऑफ द मार्केट कि नहीं 24,000 इज द बॉटम ऑफ द मार्केट, और एनीवेयर अराउंड दैट? I can't say that. It is difficult because we are not the dictators of the एंटायर सागा. ये पूरा का पूरा हम लोग डायरेक्ट नहीं कर रहे, तो हम लोग बता नहीं सकते. बट कैन वी हैव अ क्लियर कट मैंडेट कि भाई लोअर लेवल्स पे फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव हम लोगों को बाई करना चाहिए? द आंसर इज यस. फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव यस. इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म में, अगर आप पुट्स कैरी कर रहे हो, अगर आपने पुट्स खरीदे थे, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट पे आप बैठेंगे सुबह के ओपनिंग टिक पे. तो देर इज अ केस टू बी मेड आउट कि भाई अगर अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बैठे हो, थोड़ा सा प्रॉफिट आप अंदर कर लो, बुक सम प्रॉफिट्स, ब्रिंग द अदर थिंग्स, ब्रिंग योर परचेज पावर टू अ टीएसएल. बजट लो का आप टीएसएल लगा दो, ताकि अगर मार्केट वापस यहाँ से रिकवर करे, इट कैन हिट योर टीएसएल एंड टेक यू आउट ऑफ द शॉर्ट ट्रेड. राइट नाउ, सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ analyzing and playing this trade depending on what is your time frame.
शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 476 पॉइंट्स नेगेटिव खुल रहा है निफ्टी. बैंक निफ्टी इज ओपनिंग बाय अबाउट 1400 पॉइंट्स नेगेटिव. ठीक है, सेंसेक्स इज ओपनिंग बाय अबाउट 1700 पॉइंट्स नेगेटिव. तो will that continue to fall? The answer or the hint of the answer kind of lies in what is happening in the US futures. US futures अगर आप देखें is up by or is down by about 0.5%. All right, it is down by about 0.5% to 1%, and we are opening by about a negative of about 2%. So there is some disconnect here. यहाँ से क्या हम इनिशियल टिक्स हमको देखना है, फर्स्ट 15 मिनट्स हमको देखना है, डेरिवेटिव डेटा किस तरह से फॉर्म होगा वो देखना है, एंड देन वी विल नीड टू टेक अ कॉल, राइट. कल क्योंकि वी आर नाउ ऑन वेडनेसडे, सो देर इज नो एक्सपायरी टुडे. देर इज गोइंग टू बी एक्सपायरी फॉर सेंसेक्स टुमारो. वी विल ऑल्सो चेक आउट द सेंसेक्स चार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन इट इज लाइकली टू गिव. नाउ ऑलराइट, जैसे कुछ लोगों ने लिखा है कि भाई हमारे कुछ पुट्स रखे हुए हैं, हम लोगों ने कुछ पुट्स खरीदे हुए हैं. तो द आइडियल सिचुएशन इज, क्योंकि मार्केट जब खुलेगा, मार्केट में एक शार्प स्पाइक आएगा, आपके पुट्स काफी महंगे होंगे, आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होने चाहिए, और आईवी भी बढ़ेंगी. इफ यू कैन नोटिस, लेट्स गो टू द इंटरनेशनल द ट्रेडिंग व्यू, एंड यहाँ पर हम डिफॉल्ट चार्ट, ओके, डिफॉल्ट चार्ट में अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स, ऑलराइट, इंडिया विक्स का अगर आप देखेंगे आज का लेवल, विच इज ये कल का लेवल था 17, सो देर इज गोइंग टू बी अ स्पाइक इन इंडिया विक्स, करेक्ट. इंडिया विक्स में स्पाइक होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम्स, कॉल के और पुट के दोनों के बढ़ेंगे. ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ आईवी लेवल इंक्रीज, सो दे आर गोइंग टू बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव, उनका टाइम वैल्यू कंपोनेंट विल इंक्रीज. ठीक है, पुट का आप देखोगे टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों मिलाकर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा. सो अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट अगर आप घर कर लेते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी वर्थवाइल, बिकॉज इन द इंटरिम पीरियड अगर कोई बाइंग आ गई मार्केट में, इवन ड्यूरिंग द इंट्राडे, अगर फर्स्ट आवर में कुछ बाइंग आ गई, और जैसे हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद कुछ वैल्यू बाइंग आए, शायद गवर्नमेंटल सपोर्ट आ जाए फॉर वट एवर रीजन, तो आपका जो पुट में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो शायद थोड़ा कम हो जाए. सो there is nothing wrong in taking some profits off the table when you are seeing such a sharp downtick in the market. Now let us see which sectors and themes are showing some uptick. Private banks, housing, mobility, auto, tourism. Obviously, I mean these are the obvious suspects जिसमें negative tick होगा. And defense, sentimentally, I don't know how much is Indian defense contributing to the Iranian defense usage or the US में. मतलब इंडियन मेड इन इंडिया मिसाइल्स या बॉम्ब्स या रेडार्स कितने यूज हो रहे हैं, या ड्रोन्स कितने यूज हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में. I don't have a clear-cut answer. I don't think we have a very major stake in it, but शायद sentimentally India defense will also go up, like is the case with everywhere else. मतलब sentimentally कोरिया में भी जो मार्केट 10% नेगेटिव के साथ है, वहां पर भी थोड़ा सा डिफेंस स्टॉक्स में, जो कोरियन डिफेंस स्टॉक्स हैं, उसमें भी थोड़ा सेंटिमेंटल पॉजिटिव दिख रहा है. ऑलराइट, सो एसेंशियली अगर आप देखें विच आर द वंस विच आर फॉलोइंग द लीस्ट इन द रिलेटिव सेंस, डिफेंस इज पॉजिटिव. सीपीएससी को एक बार इग्नोर करते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, दैट इज अगेन लेड बाय डिफेंस ओनली, क्योंकि उसमें भी जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं एचएएल वगैरह, उन्हीं के कारण यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखेगी. आईटी, फार्मा आर द सेक्टर्स, दो दे आर डाउन बाय अबाउट 1.5%. आप देखिए इन दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, आईटी एंड डिफेंस, IT and pharma are still following the least. So this is some clue that we will have to understand. Let's now switch to the 5-minute chart and wait for the markets to open. And देखते हैं मार्केट ओपन होते ही
किस तरह का एक रुझान दिखाता है. What is it going to show? Let me also add India VIX here. इंडिया विक्स भी ऐड करते हैं. इंडिया विक्स जैसे बताया था, लेट अस जस्ट ऐड इंडिया विक्स हियर. Okay, now India VIX, there is a strong spike. Market is trying to defend the opening tick. All right, let us see what is going to happen. Which are the sectors and themes which are showing some positive move? Defense, IT. Are you surprised that IT is going up, or did we say that IT is at a value level and there could be some possibility of some sort of a buying in IT? Crude oil is moving up non-stop is the observation by a friend of ours in the chat. We have been tracking crude oil from $55 levels, and we had noticed that there is a breakout level, a strong resistance at around 66. If crude crosses above that, there could be a possibility that crude will go up till 78. This is the nearest resistance we had noticed. 70 भी एक था, and 78 was the next resistance. Right? So crude now is trading above 70 and 78 के बीच में trade कर रहा है, about $75. We have already discussed about crude. We have a structural view on crude that it will reverse from these levels of $78 and come back into the channel if there is some. अगर ये नहीं होता है, then broadly speaking markets में problem हो सकती है on a protracted basis. So inter-market analysis, keeping an eye on crude sustaining above $78 is going to be bad for the emerging market equities, especially China, especially India. क्योंकि हम लोग इंडिया मार्केट ट्रेड ज्यादा करते हैं, तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट्स, एंड इंडियन इक्विटीज के लिए ये काफी पेनफुल हो सकता है. But my call of level would be $78 and above. That is the place where I am looking at from a structural point of view in crude. And ये पूरा वो स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने कई बारी डिस्कस किया है. All right, this is the structure that we have been keeping an eye out. Now let's go back to the Indian markets. So surprisingly, defense has given up all the gains. जो मुझे भी लग रहा था कि डिफेंस, इंडियन डिफेंस का रखना या का बढ़ना इन ईरान एंड यूएस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं था. सेंटिमेंटल थीमेटिक रिलेशन हो सकता है कि भाई फियर फैक्टर के कारण डिफेंस कुड बी अ प्ले, बट मोर देन दैट आई वुड गो बाय द चार्ट स्ट्रक्चर. एंड हम लोगों ने दो ही चार्ट्स पे ज्यादा फोकस किया है ऑफ लेट, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द इंडाइसेस. दो ही सेक्टर या थीम्स पे हम लोगों ने फोकस किया, विच इज द आईटी एंड द फार्मा हेल्थ केयर area, right? IT surprisingly is moving up. Rest of the sectors, if you notice, is all down very, very sharply. Now, let me just go through some of the questions. And निफ्टी हो गया. यहाँ पर हम लोगों ने मिड कैप खोला हुआ था. So from a daily chart perspective, what we notice, सेंसेक्स का चार्ट सही है क्या? बिकॉज वो गैप डाउन 80,000 से 78,000, 2000 पॉइंट. ठीक है, इट इज वेरी करेक्ट. Okay, so what do we notice on the daily chart? The market is trying to struggle. Market is struggling and it is trying to hold on to the opening tick and is trying to create some sort of a support. Initial ticks हैं, we cannot really take a judgment on it. But हम वापस अपने वो 5 मिनट के चार्ट्स पे
जाके बैठते हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का रुझान क्या हो सकता है। इन द मीन टाइम लेट अस ऑल्सो गो एंड ओपन द ऑप्शन चेन to find out what is likely scenario. Now, change in Y क्या हो रहा है is what is more of interest. कॉल्स में ज्यादा राइटिंग है, सो द मार्केट इज फेयरली बेरिश, तो कॉल राइटिंग काफी हो रही है। एंड यू नोटिस दैट पुट्स में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट हावेवर 24,400 लेवल जो कि चार्ट्स पे अगर आप देखें इज दिस लेवल, राइट, 24,400 द करंट मार्केट प्राइस। यहां पर कॉल एंड पुट दोनों काफी लिखे जा रहे हैं, राइट। सो देर इज अ फाइट at 24,400 levels. Which side will give up will decide the intraday course of action. So 24,400 का जो strike level है, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। Now 24,400 strikes में puts are calls are 9,41,000 and puts are 8,93,000. Let's note this down somewhere. Okay, pre-market. Let us just complete this. Negative open with a massive gap down of minus 500 points. Key index levels 24,471, budget low likely to be breached if prices sustain below this, then short term negative. Open interest levels, intraday technical structure weak, and volatile as well. Now, the numbers that we wanted to note down are here. Okay, so we have got some more data, which is 19,41,000 calls and 18 lakhs put. So हम लोग इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ओपन इंटरेस्ट लेवल 24,400, स्ट्राइक कॉल change is 19 lakh shares, and put change is 18 lakh shares. All right, so this is something that is crucial. We are keeping an eye out on the 24,400 levels because that is the spot. ओके, सो मिड कैप निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो 5 मिनट का जो ओपनिंग रेंज था उसको ब्रेक करते हुए नीचे ट्रेंड कर रहा है। सो द ब्रॉड मार्केट सेंटिमेंट इज वीकर एज कंपेयर टू निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स। वहां पर भी वीकनेस दिख रही है, राइट। फ्रॉम द ओपनिंग टिक वी आर ट्राइंग टू ट्रेंड डाउन फर्दर। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी? लेट अस आल्सो ओपन बैंक निफ्टी एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग देयर। Now, Bank Nifty, which is moving in this broad channel and is nowhere close to the budget low, has in fact shown a open is equal to low. मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ आती दिख रही है, थोड़ी बाइंग जो है बैंक निफ्टी में जरूर आती दिख रही है। सो इफ यू जस्ट नोटिस द प्राइजेस, उसमें इतना क्लैरिटी नहीं मिलता है, बट व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग द प्राइस एक्शन ऑन द चार्ट, उसमें हमको वो डाइवर्जेंस दिखना चालू होता है। Okay, now the strongest falls are in housing. Now, which is very surprising, right? You would expect export-oriented companies and sectors and themes to do the worst. मतलब आईटी या फार्मा एक्सपोर्ट्स या टेक्सटाइल्स, इस तरह के जो जेम्स एंड ज्वेलरी या इंफ्रा एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, those are the companies, those are the sectors which should face the maximum heat. But अगर हम देखें तो सरप्राइजिंगली internal facing companies, realty, housing, to core housing,
These are the ones which are facing the maximum issue. The one which we have been maintaining for some time, we have been maintaining an eye out, is IT sector. This is the weekly chart of the IT sector. हम लोगों ने यही बोला था कि अगर यहाँ पर कोई भी रिवर्सल दिखता है, if we notice that there is going to be some sort of a reversal, since we have marked this, since we have breached this, let us just mark the level in this fashion. Okay, तो ये level जो है, if this level holds, which is the 30,000, 31,000 level, and the market bases around this and tries to cross up, so 31,300, 31,500 would be the line in sand for me कि इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड करने लगता है over the next few weeks, there is likely to be a strong revival in IT sector. अगर ये लेवल ब्रेक करता है, then my dear friends, this is the place where IT sector can come down further. Okay, so we do notice that IT is trying to hold on to these lower levels of 30,000 levels, and there is some hope here because from a market perspective, IT is in deep value territory. From a technical standpoint, it is deeply oversold. 22 levels का IT sector में इंडेक्स दिखा रहा है ऑन RSI, which is very very low. आप देख रहे हो 22 levels पिछले 2-3 साल में कभी भी नहीं आया था. So IT में काफी डीप वैल्यू आती हुई दिख रही है. Now let us see some of the other key indices. What is it doing on the daily time frame? Let's keep an eye out on the data that is building up here. Okay, 24,350 पे पुट राइटिंग हो रही है 17 lakhs की, बट यहाँ पर जो हम लोगों ने नोटिस किया था 24,400 पे कॉल एंड पुट बोथ आर 25 lakhs. In fact, put writing, put OI has now increased to 25,087, 25 plus lakhs. तो यहाँ पर let us just note this, from 19 lakhs it is now 25 lakhs. This is call at 24,400 and put at 24,400 is also 19 से लेके 25 lakhs. So the put as well as call open interest on the 24,400 level has maintained its trajectory. Oh, very very interesting. Data काफी जल्दी change हो गया, and we will have to make note of this. Call open interest is 28 and put open interest is 25. Okay, so data is now turning negative on the indices. Derivative data is turning negative on the indices as well as the price action. अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन जो है is also turning negative. Okay, now on the smaller time frame, so definitely we are going to be oversold. Okay, see price action में तो very clearly we are oversold, but in terms of RSI, interesting, even on a 7, मतलब on most of the time frames आप देख रहे हो कि markets are oversold. Daily time frame पे भी markets have created a lower low, RSI has created an equal low, and now markets are at an oversold territory, right? तो from a structural point of view, अगर कोई technical bounce आता है, one should not be surprised. Whether that bounce is an opportunity to sell into the bounce is something that we will have to see. क्योंकि अगर ये bounce होके ऊपर भी आता है तो 25,000 levels, which is 700 points from here, is a very very strong resistance now.
ठीक है, 25,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, एंड अगर वो रेजिस्टेंस पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू फॉलो दिस ट्रेंड लाइन, दिस डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये कंजेशन जोन पे जब 25,000 पे आएगा, देयर कुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन द मार्केट। टेक्निकल बाउंस होने की पूरी उम्मीद हो सकती है, बट द मार्केट्स आर एसेंशियली वीक and we can see the weakness getting manifested in the open interest as well. So from a price action perspective, if this opening range breaks on the downside, then there is an opportunity for intraday shorts getting manifested here. So the first 15-minute candle on all the indices, on all the major indices, is negative. We will have to wait and watch what sort of further price action we are likely to see. All right, now let us see some of the futures smart list build-ups, especially in stocks. OI gainers क्या है? एक तरीका ये होता है कि we go to our primary chart, primary window, and there we open the futures smart list. Look at OI gainers for index, OI gainers for stocks as well. Okay, commodities में देखें, सरप्राइजिंगली सिल्वर में काफी स्ट्रॉन्ग एंड गोल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग OI गेन्स हैं. OI gainers are going to be, okay, natural gas, but the price is down. Okay, so there is a short build up in, which is very surprising, right? अगर आप crude oil देखो, in the Indian equity market, in the Indian commodity market, crude oil futures are all negative. I don't know if this data is absolutely correct or not. क्योंकि आप OI gainers में देखेंगे, आप prices देखेंगे, natural gas, crude, they are actually negative, which is very surprising. ओके, स्टॉक्स में देखते हैं, स्टॉक्स में वाई गेनर्स कौन से हैं. You will this is one way of looking at it. The other way is come to the chart here, and यहाँ पर आप you open this market watch. In the market watch, let me just open one chart, and in the market watch भी आप यहाँ पर OI मूवर्स देख सकते हैं. Okay, so OI movers, stocks futures. Okay, futures. Futures for top volume, DI, okay, MSC, options, futures. Okay, most premium यहाँ पर Y movers. We can see Bank Nifty, Fin Nifty, Nifty, obvious short build-ups. Federal Bank, ONGC. ONGC is also a short build-up, which is a little surprising, considering that ONGC is a manufacturer of or a crude oil exploration वाली कंपनी है. तो यहाँ पर इसको ऊपर होना चाहिए था. Petronet has an issue because LNG जो उनको मिलता है from Saudi, there is some disruption in the supply, some temporary disruption, which is why Petronet में force majeure का notice आया है by the supplier of LNG. So some of these companies are facing force majeure notices, जिसके कारण you will see some weakness in these stocks. And the surprising part is even the defense stocks are on the downside. Yeah, now ONGC is showing mild uptick, and so is Solar Industries. Most discount, most premium. If अगर हम notice करें, you will find not many. Okay, there are some companies like Ruby Mills, Jindal Drill. I think we should be focusing on
NSE 100, the top companies. Infosys is up by 1.4%. Coal India is up, and most of the other companies are losing. L&T continues to show weakness because L&T का गल्फ में काफी काम होता है, तो वहां पर इशू हो सकते हैं. Shriram Finance, again, this company is completely focused on the Indian equity, Indian markets. So Shriram Finance में issue आए is something of a disconnect in my opinion. Chola Finance, again, I mean, NBFC is focusing on the Indian companies, जिसका insurance का बड़ा book नहीं है, तो उनको effect आना is kind of an opportunity screaming in your face. Now, look at the market. Market क्या कर रहा है? Over the last 15 minutes, market has given up the gains and वो 15 मिनट का जो एक लो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है. And the data also should be showing something of that nature. So intraday में we are what we know expected to show a strong, a buying, a sustained buying from the downside is not happening, which is not great for the market. So Sensex में भी yesterday's low is broken and Nifty में तो वो काफी handsomely break किया था and we are trending lower. So there is going to be some further weakness in the market if you notice this. चलिए कुछ स्टॉक के भी आप लोगों ने पूछा था. One is RVNL. Again, we are not going to be recommending any trades in the stocks. All we are going to do is look at the stocks price chart. And in RVNL, this is what I see, that there is some sort of a what I notice is RVNL has broken through these support levels. ठीक है, ये जो एक सपोर्ट लेवल था अराउंड 305, साइकोलॉजिकल नंबर, होल नंबर ऑफ 300, वो भी तोड़ चुका है. दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ RVNL and the nearest support now from a price action perspective seems to be between 260 and 200 rupees, 213. Let me put the super trend in RVNL. ठीक है, so if you notice, a technical support level of the super trend which was at 296 got broken today, or at least has been breached today. ये वीकली सपोर्ट है, वीकली सुपर ट्रेंड का सपोर्ट था, डायनामिक सपोर्ट. अगर ये हफ्ता पूरा इस तरह से ब्रेक हुआ, then there is likely to be further weakness in this stock. In terms of RSI on the weekly time frame, and of the daily time frame also, RSI, while it is showing a weakness, but ये properly oversold territory में नहीं है. तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि भाई क्या RVNL थोड़ा और नीचे जाने की chances दिखा सकता है. So RVNL, there is an opportunity, there is some chance that it can trend further low, because in terms of technicals, it is not fully oversold yet, and it is now trading below the 300 psychological mark, जहां पर वो prior supports लेता हुआ 2-3 बार it has attempted. But if you look at the structural story in RVNL, and if I had to mark the regression channel, very clearly you can see that there is a structural down story in RVNL from a price action perspective. All right.
At 78, Pearson's are 0.78. The structure is fairly weak in RVNL. Okay. Any other questions that you have? Any other stocks? Please let me know. We can check the broad structure of those stocks as well. My primary concern would be, will Nifty hold on to these levels of 24,300 and trend up? The ideal situation for Nifty, or the hopeful situation for Nifty would be this. अगर निफ्टी ने आज का ये जो डे हाई है विच इज 24,476, ओके, एंड आज का जो डे लो है, all right, so the day low is 315 and 476 is the day high. Okay, so the clean trade for me could possibly emerge here as well, which is this current level. या समझो यहाँ पर 24,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस डेटा अगर आप देखें, ऑप्शंस डेटा क्या बता रहा है, लेट अस अगेन रिफ्रेश दिस. There is a lot of call writing of nearly 40 lakh shares as compared to 30 lakh shares on the put side. तो मतलब कॉल राइटिंग शार्प है, कॉल राइटिंग ज्यादा है. तो 24,400 ये लेवल पे पुट एंड कॉल जो है इक्वल है अभी, राइट, द रेड एंड ग्रीन बार्स. 24,300 पे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. So market is likely to hold the 24,300 at least for today. ठीक है, and 24,400 पे put and call are equidistant. ठीक है, equal. तो the important inflection point in my opinion would be the 24,400 level, which we have been mentioning and noticing since the beginning of the trading session. तो अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेंड करना चालू करता है, let's go to a further refined time frame of 3 minutes, okay, just to get an idea कि मार्केट क्या करना चाहते हैं. Let's look at some of the technicals. Correct, technicals में अगर आप देखेंगे, मार्केट has clearly created what you would call प्राइस एक्शन में तो डेफिनेटली लोअर लो है, एंड आरएसआई में अगर आप देखें तो इक्वल लो है एट ओवरसोल्ड लेवल्स. एंड मार्केट जो है इट कैन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट तो होगा टू टच द 476 लेवल्स, एक अटेम्प्ट तो हो सकता है. एंड एज वी स्पीक मार्केट इज ट्राइंग टू डू अ टर्न ऑन द 24,400 levels. So it is going to be very interesting to watch price action wise as well as options data wise. Okay, finally एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग और देख लेते हैं, which is India VIX. Has it now started to inch up or has it cooled down? Okay, so as expected, as on expected lines, India VIX spiked up in the initial trades, okay, and is now trending in a consolidation range. This range consolidation, ठीक है, ये होल्ड करता है कि नहीं करता है. सो ट्रेड इन इंडिया विक्स वुड बी, मतलब अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू कंबाइन दिस विद इंडिया विक्स, ऑप्शन बाइंग में आप कॉल या पुट कोई भी चीज खरीद रहे हो, डायरेक्शनली स्पीकिंग, इंडिया विक्स अगर ये 20,000 20.70 के ऊपर ट्रेड करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट द वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड. ठीक है, क्योंकि स्पाइक हुआ है, कंसोलिडेशन है. अब ये कंसोलिडेशन लेवल ऑफ 20.70 ऊपर की तरफ ब्रीच करता है, दैट इज व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट volatility will continue to rise. Finally, before we close the day for close the room for the day, we can notice that the concentrated selling pressure from the bears is happening on 24,400 and 24,500. 500 तो काफी दूर की बात है, 400 is the point of contention. एंड क्योंकि हम लोग वापस 400 लेवल्स पे आ रहे हैं एंड मार्केट्स इस तरह का एक यू टर्न करता हुआ दिख रहा है,
on the 3-minute time frame, what is going to be interesting to notice the numbers here. 42 lakh calls and 31 lakh puts. तो ये नंबर को थोड़ा ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एन इंट्राडे ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव कि अगर यहाँ पे फ्लिप होने लगता है, इफ यू नोटिस पुट्स राइजिंग, put open interest writing rising and call open interest from the current level of 42, अगर यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर अगर कुछ पुल बैक होता दिखता है and price sustains the 24,400 levels, there could be an opportunity, there could be a possibility कि market 24,476 या possibly 500 levels एक बार के लिए टेस्ट करें, जहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं. All right, friends. So before we close the room for the day, one final look at the daily structure on all the indices. Doji, a green doji, but with a very sharp downtick. Sensex is holding on to the lows that it had created a couple of days back. And if you look at the indices list of sectors and themes, IT is showing surprising strength of nearly gains of 1%, and pharma also continues to be in that list. Defense, which was the pre-open market gainer, has kind of given up on most of the gains, but it still remains one of the better performing sectors, relatively speaking. Metal and surprisingly, housing and PSU banks are showing weakness. So I hope the session was interesting and insightful for all of you. Tomorrow happens to be Sensex expiry. We will all gather tomorrow at 8:45 sharp to understand कि कल की expiry कैसे हो सकती है. Till such time, please take care and have a safe day and a good trading day for all of you. Take care. Bye-bye.